Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call. First, we'll start with technical derivatives update. If you see yesterday's trading session, we had opened with a positive bias, and we had opened to manage above 18,000 levels, the crucial 18,000 levels. And the icing on the cake was that we would manage to hold that levels throughout the trading session and closed about that 18,070. Yesterday, if we see on the sectorial front, then PSU banks and healthcare and oil and gas and IT stock had witnessed profit booking marginally, but lower. But we could see strength in metals and private banks. On the daily chart, we had registered a small gap that is of 60 odd points also. And then we also now retreat that up till 18,000 and is hold. And then we can move towards a new high that is 18,500 and 18,600 levels. But yesterday, as we see that that inflation data came from the US was very bad, due to which we have seen a negative of 4 to 5% downtake in US. And we could see the follow-on effect in the Indian markets also, and we could open near about 320 points lower. So up till 17,800 is hold, and if we open lower and we move over 17,800 throughout the trading session, then still our stance remains the same, and we could then again move towards 18,000 and 18,000 plus levels. Similarly, in the Bank Nifty also was trading in the yesterday's range. It broke out and moved towards 41,000 level, but it made a high near 4,900 zones. And again, for the Bank Nifty also remains the same, that if we hold 40,000 levels, or if we move a little bit below 40,000 and reclaim 40,000 in the second half, so we can move towards 41,000 and make a new high. So overall, the stance remains the same. And on the derivative front, if we see that we had seen a short covering to the tune of 1.3%, that is reduction of 0.19 million shares. And the advanced decline ratio was also positive with 108 stocks on the gaining side and 90 stocks on the losing side. On the PCR front, then we had a good PCR of 1.39 against 1.18. And on the options front, if we see, then major additions on the call side, we had seen in 18,000, 18,100. Sorry, on the put side, we had seen in 18,000, 18,100. That is addition of 5.19 and 1.55 million shares respectively. And on the call side, the writers have moved towards to 18,400 and 18,500 levels. On the Bank Nifty also, on the option front, we have seen that 4,800 saw good writing in put and 41,000 saw good writing in call side. And the Bank Nifty also yesterday added near about 4% longs, that is 1 lakh shares additionally. In the stock specifics, and then the longs were seen in Polycab, MFSL, and Voltas. And top three short builders were seen in About India, Lalpath Lab, and Crompton. On the FI side, if we see, then FI also covered their shorts by 31,000 contracts. Now they are only net short by 34,000. So their now the long short ratio has also improved from previously from 18-20% to 35%. On the cash side also yesterday, FI bought to the tune of 1956 crores and DI bought to the tune, sold to the tune of 1268 crores. So that's it from mine. I'll hand over to Bhavesh sir for more updates. Thank you. Hi, good morning, team. So, a couple of updates. First, on Infosys. So, Infosys has been selected by Belgium Post to build robust cyber resilience system. But it's not known as of now. Secondly, on media. So, on PVR Inox, the Competition Commission of India has rejected a complaint against the proposed merger of Multiplex. So this is positive. One non-profit organization had filed a case against them a couple of weeks back, but that has been rejected by CCI. So there is no CCI has stated that the fear of likelihood of any anti-competitive practices cannot lead to any investigation. So overall, this is very positive for both these companies, and we currently have a buy rating on PVR with a target price of 2215, and for Inox. Thank you, sir. Few more updates from my side. Good morning, everyone. So Vedanta Limited yesterday said his company is considering second chip and display manufacturing facility in India. So it's announced $20 billion investment plan for its first such a venture. Yesterday we updated on Gujarat. So next update on GSW still. So GSW still flagship company of
$22 million GSW Group partner with Germany engineering and technology company SMS Group to explore cutting edge solution as well as research and development project to reduce carbon emission at the home ground steelmakers iron and steelmaking units in India. So companies will explore opportunity to reduce carbon emission and manufacturing green steel. Next update on Maharashtra scooters. Company said that the company has a declared interim dividend of 100 rupees per share, face value of 10 rupees for the financial year ending March 2023. So the record date for the eligibility members to receive interim dividend has been fixed September 23. Next update on Bharat Forge. Bharat Forge said its unit Kalyani Powertrain has joined hands with US-based Harbinger Motors to form a joint venture focus on developing electric drivetrain solution for the commercial vehicle market. So Kalyani Powertrain is a global supplier of critical chassis and powertrain components, while Harbinger Motors into the development of electric commercial vehicles. So this new joint venture, Electro Forge, will leverage the strength of both partners. Bharat Forge yesterday update on the update. Next update on Lupin. Lupin said its biosimilar product Ramti indicated the treatment of arthritis has received approval from the Canadian Health Authority. The company's products is the biosimilar for reference drug Entacrept. So next update on same pharma sector, Zydus Life Science has received approval from the US health regulator to sell lenalidomide capsule used in the treatment of various types of cancers in the American market. So company has received approval from the US FDA to the market product in the strengths of 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg and 25 mg. A last update on IRCTC has received nod from the register of companies to act as a payment aggregator. So that's it from my end, ma'am. I will hand over to Prabhakar sir for further research update. Thank you and over to you, sir. Thank you, Sitija. Good morning, team. Prime Minister would release the National Logistic Policy on September 17. Now, this is very important because now when it comes to logistic, we are not even 10% of what happens in China. Now, there, now once the good is manufactured, the way it reaches the port and how it is loaded on the ship also is the fastest. Now we are very slow, so no, that integration is very important. So no, so the focus, the policy focus will be on process re-engineering, digitalization, and multimodal transport. So I think if this policy is very positive, then Blue Dart, Mahindra Logistic, Concor will be few stocks which will benefit. Retail sales in shopping malls to grow at 29% CAGR to reach $39 billion by FY 2028. That is what papers are saying. So this is positive for trend. Titan, DMart, these are very important. JSW Steel has signed MOU with German SMS Group for carbon reduction. The project needs an investment of 10,000 crores to reduce carbon emission. US market and Asian market corrected after US inflation data, which was way higher than what market was expecting. But it will have a temporary impact, but I don't think Indian market will correct. So till we don't break 17,100, we need to be positive. Any panic opening is a good opportunity to buy in stock, but be clear, we have to be in sectors which are in momentum. I've been repeating that averaging IT or averaging other stocks which are at 52-week low will not benefit you. Any, these kind of negative news is going to be there globally, and every time you will see this gap down. So, and IT stocks or stocks which are even pharma, IT, if you have it, it is okay, wait for a long term, but please do not average or put fresh money in these stocks. Banks, capital goods,
Now, selected life insurance companies. Now, what is in momentum? Chemical companies. What is in momentum is where you need to make money in short term. Tire export from India grows at 31% in Q1 FY23 at 6,213 crores versus 4,754 crores. Tire export has grown, but I think we are a bit negative on Balakrishna Industries. No, the reason is they are a major supplier for tractors in Europe, and that business has not done very well. These are other tires which are exported. It is not about Balakrishna Industries. SEBI chairman was speaking on Tuesday. The regulator said, no, they don't have any role on pricing policy of IPOs. So as an investor, we need to be careful. Many times, if one or two issues, if they list at 100% premium, people get carried away and they start to go into IPOs. No, they think it is a lottery. It is not so. IPO needs a lot of study, and we need to read the document. And for us as analysts, we don't have data to predict also. So IPO is something that I would not recommend. India and China has completed the disengagement process in the eastern Ladakh sector, and at all friction point. No, it is almost, it started in May 2020 frictions, and now everything is set. And the Shanghai Cooperation Organization, there is 2-day meeting on 15th and 16th in Uzbekistan, where I think our Prime Minister will be meeting Mr. Putin. Even the Chinese premier will be there. Whether there is a meeting, nobody knows. So it is a gray area there. But there can the possibility of a meeting is there. That is why now the process, disengagement process started, is my understanding. KAC wins international orders of 1,108 crores. So this is a bit positive. Yesterday we talked about many stocks. And I would like to repeat those stocks. Tata Power, Tata Chemical, Ami Organic, SRF, Clean Science, Jubilant Food, Devyani, Federal Bank, Siemens, ABB, Kolte Patel, Blue Dart, SBI Life, HDFC Life, ICICI Pru Life, Mahindra Holiday Resorts, Indian Hotel. No, these are stocks which we said we like. So even hotels and QSR, we even like DMart at current level. So these are stocks which we like. And with festival season coming, I think Jubilant Food, DMart, Westlife, Trend will do very good. There were few queries yesterday. In that, people asked about Reliance. Reliance, somehow I'm not too positive because the demerger is going to take some pain. IRCTC, somebody asked. IRCTC is not looking good. There are too many train cancellation. So IRCTC revenue is mainly based on booking and food and other items in the railways, which is not doing great. Tata Communication, we don't track the stock, so we won't be able to comment on it. Navin Fluorine is looking very good, another chemical stock. So yesterday's query also I've answered now. But we are not positive on IT, pharma. So be in sector which will be very good. With that, over to you, Brijesh. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। तो पहला अपडेट है इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस के ऊपर उन्होंने बेल्जियम पोस्ट जो एक कंपनी है, उन्होंने इन्फोसिस को सिलेक्ट किया है उनके जो साइबर सिस्टम को मेंटेन बिल्ड करने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इन्फोसिस के लिए। उसके डील के साइज फिलहाल तो पता नहीं है, बट अगर हम इसके बेल्जियम पोस्ट के अगर उसके फाइनेंशियल्स को देखते तो वो 4.3 बिलियन यूरोस का इनकम किया था 2021 में, और उनके जो 11% के CAGR के हिसाब से वो ओवरऑल ग्रो करे। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ये जो ऑर्डर बुक मिला है इन्फोसिस को तो बेसिकली पॉजिटिव रहेगा, और हमारा
होल्ड रेटिंग है इन्फोसिस के ऊपर। हमारा जो टारगेट प्राइस है ये 1510 का है इन्फोसिस के ऊपर। और एक न्यूज अपडेट है आइनॉक्स और पीवीआर के ऊपर। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने एक केस फाइल किया था। ये बोला था कि अगर ये पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर होता है तो वो ये सिंगल लार्जेस्ट होगा, तो इसकी वजह से काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स है। तो कमीशन कंप्लीट ऑफ इंडिया ने ये बताया कि ये जो कंसर्न है सिर्फ फियर के चलते हुए है, तो ये फियर के चलते हुए जो कंसर्न के ऊपर वो एक्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसके ये जो क्वेरी जो रेस हुआ था उसके ऊपर उन्होंने नेगेटिव आउटपुट दिया, तो जो पीवीआर और आइनॉक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। हमारा होल्ड रेटिंग है पीवीआर के ऊपर हमारा टारगेट प्राइस 2215 और आइनॉक्स के ऊपर हम 665 का व्यू है हमारा। तो दोनों में ही ये जो न्यूज जो आया है हमें लगता है कि शायद पॉजिटिव रहेगा इसके लिए पीवीआर और आइनॉक्स के लिए। अगला अपडेट है वेदांता के ऊपर। वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उन्होंने बोला है कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि वो जो चिप मैनेजमेंट और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया में बनाने के लिए, इसके लिए उन्होंने 20 बिलियन जो 1.54 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया, और जो ये पहले होगा गुजरात में होगा, गुजरात से वो स्टार्ट करेंगे। उनको सेम प्रपोजल के लिए ऑफर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी मिला है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये चिप मैनेजमेंट का जो ओवरऑल इशू जो चल रहा था ग्लोबली, अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चालू करते तो इससे काफी फर्क गिरेगा और अपने इंडियन ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिट होगा। तो ये पॉजिटिव रहेगा वेदांता के लिए। सेकेंड अपडेट है जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील ने बोला है कि वो जर्मन इंजीनियरिंग एक कंपनी है, उनके साथ वो टाई अप कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी और कटिंग एज सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए। बेसिकली ये इनका जो अप्रोच है, ये कार्बन जो एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशंस और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इनका बढ़ावा है ये। सो ये पॉजिटिव न्यूज रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए। अगला न्यूज है भारत फोर्ज पे। भारत फौज ने कल के दिन में ये बताया कि उनका जो एक यूनिट है कल्याणी पावर ट्रेन, उन्होंने यूएस बेस्ड एक कंपनी है हरबिनकर मोटर्स, उनके साथ जॉइंट वेंचर उन्होंने किया है। बेसिकली ये कल्याणी पावर जो है वो चेसिस और पावर ट्रेन कंपोनेंट्स बनाती है, जबकि ये हरबिनकर मोटर्स जो है वो इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स में डील करती है। तो दोनों के जॉइंट वेंचर्स इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा। तो ये भारत फौज के लिए ये अच्छा है। अगला अपडेट है महाराष्ट्र स्कूटर्स के ऊपर। महाराष्ट्र स्कूटर ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 100 पर शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ₹10। तो ये करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 2023 के लिए इसका जो रिकॉर्ड डेट जो उन्होंने डिक्लेयर किया वो 23 सितंबर है। अगला एक न्यूज है लुपिन के ऊपर। लुपिन ने बताया कि उनका जो बायोसिमिलर प्रोडक्ट IMT, वो उनको अप्रूवल मिला है कैनेडियन हेल्थ अथॉरिटी से। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म के लिए शायद पॉजिटिव न्यूज हो सकता है लुपिन के लेते हुए। अगला एक न्यूज अपडेट है IRCTC के ऊपर, और उनको वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास से वो NOD नो ऑब्जेक्शन मिला है ऐसे पेमेंट एग्रीगेटर एक्ट करने के लिए। तो ये भी शायद इसकी शॉर्ट टर्म में IRCTC के लिए थोड़ा सा न्यूज बेस्ड है, तो फिर शायद थोड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगला अपडेट है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर शायद हमारे पॉलिसी डिजाइन करेंगे। होता क्या है कि हाँ हम 10% भी नहीं है चाइना के कंपैरिजन में। और चाइना में क्या होता है कि जब भी आपका कुछ लॉजिस्टिक होता है तो काफी कुछ चीज प्रोसेस में होता है, तो इमीडिएट उसमें एक्शन होते हैं, जो हमारे यहाँ पे काफी थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर पॉलिसी डिजाइन लॉजिस्टिक्स के वो पॉलिसी डिजाइन करते हैं तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा ये ब्लू डार्ट महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ऐसे कंपनियों के लिए। तो शायद आने वाले दिनों में लॉजिस्टिक्स बिजनेस में थोड़ा ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है।
कल हमने देखा कि यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन डेटा आया जिसके और वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेशंस के से ज्यादा था, तो ये जो कल जो हमने क्लोज टू 4 to 5% का करेक्शन जो यूएस मार्केट में देखा था, तो हो सकता है कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है। इसमें हम ये नहीं बता रहे कि इसमें शायद ज्यादा वीकनेस होगा मार्केट में, मे बी ग्लोबली वीकनेस हो सकता है, लेकिन अपने जो इंडियन इंडेक्सेस है उसमें उतना मेजर वीकनेस नहीं देखने को मिलेगा। हमने बीच में ब्रेकआउट देखा था 17,800 के लेवल पे। सो आज जो भी करेक्शंस आते हैं 17,800 के आसपास अगर पुल बैक आता है, ये सस्टेन कर जाता है, तो ये डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर हमें लेवल के हिसाब से देखना तो 17,100 का लेवल हमें वॉच करना है। तो जब तक 17,100 ब्रेक नहीं करता है हमारा व्यू पॉजिटिव है। जब भी कोई जो भी मोमेंटम में है, जो स्टॉक है, जो सेक्टर्स मोमेंटम में है, उसी में हमको ध्यान रखना है। एक आईटी है जिसमें हमने काफी दिनों से कॉशियस व्यू मेंटेन किया, तो आईटी में आप प्लीज एवरेज ना करें, तो ये हम बता रहे हैं। तो जबकि बैंकिंग, कैपिटल और केमिकल ये सेक्टर्स हैं जिसमें ये आउट परफॉर्म करे। तो बेसिकली आज का जो गैप डाउन सेशन होगा तो इसमें सिलेक्टेड जो भी स्टॉक्स होंगे, तो हमें लगता है कि आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। दूसरा न्यूज है टायर स्टॉक्स के ऊपर। टायर के जो एक्सपोर्ट्स है वो 31% से ग्रो हुआ है, बट एक बालकृष्ण जो इंडस्ट्री है जिसमें उसमें हमारा उतना पॉजिटिव व्यू नहीं है। जो उसके यूरोप को बेसिकली उसके यूरोप के बिजनेस को रिलेटेड है, वहाँ पे उसके सेल्स और उतने ग्रोथ नहीं हो रहे, तो हमारा थोड़ा सा उसमें साइडवेज टू नेगेटिव बायस है। अगर आपके पोजिशन है तो थोड़ा उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। अगला अपडेट है सेबी। सेबी के जो चेयरमैन उसने बताया कि जो आईपीओ जो लिस्टिंग होते हैं उसमें जो प्राइसिंग पावर है वो उनके हाथ में नहीं है। तो हमें काफी कॉशियस होना पड़ेगा। अगर आईपीओ में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सब कुछ जानकर ही फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। सेबी इसमें उनका डायरेक्ट कुछ रोल नहीं है, ये वो बताना चाह रहे हैं। कल के जो क्वेश्चन आंसर के सेशन थे उसमें हमने रिलायंस का किसी ने क्वेरी पूछा, तो रिलायंस में हम उतने एग्रेसिव बाय करेंटली फ्रेश बाय तो डेफिनेटली हम रिकमेंड नहीं करें। आपको पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हो, बट हम ये चाहेंगे कि आप इसमें नया पोजीशंस नहीं बने, और एवरेज करने के लिए भी अगर करना चाहते हो तो वेट एंड वॉच करें। मार्केट का एक बार करेक्टिव होता है तो ही उसमें आप कर सकते हो। तो रिलायंस में हमारा फ्रेश बाइंग का व्यू नहीं है और पॉजिटिव व्यू भी नहीं है ये लेवल से। अगला एक अपडेट था वो आईआरसीटीसी के ऊपर जो कल क्वेरी था, तो उसके काफी सारे ट्रेन कैंसिल हो रहे हैं। उसका जो मेन बिजनेस है वो बुकिंग के थ्रू होता है, जो एडवांस बुकिंग होता है फूड, और जो उनके रेस्टोरेंट जो फूड का जो बिजनेस है। तो रिसेंटली ये देखा गया कि काफी सारे ट्रेन कैंसिल हो रहे हैं, बुकिंग्स थोड़े से उसमें उतने अप्रिसिएशन नहीं है। तो हम फिलहाल उतने एग्रेसिवली हम आईआरसीटीसी भी बायस मेंटेन नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा कॉशियस भी है। तो अगला एक न्यूज है टाटा कम्युनिकेशन पे, ये हम ट्रैक नहीं कर रहे, तो उस पे भी हमारा कॉशियस व्यू तो नेगेटिव रहेगा। अगला एक लास्ट अपडेट है नवीन फ्लोरो के। ओवरऑल केमिकल्स स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं, तो इसमें हमारा पॉजिटिव व्यू है। तो अगर किसी का वो है इन्वेस्टेड तो इसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर किसी को बाय करना है तो करेक्शंस पे आप बाय कर सकते हो। तो ओवरऑल मार्केट में फिलहाल हम कंटिन्यू अभी भी बुलिश मेंटेन ही करके चल रहा है, क्योंकि हमने मार्केट में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखा है, जो हमें लगता है कि जो ग्लोबल जो करेक्शन है, ग्लोबल करेक्शन की वजह से जो अपने को अपॉर्चुनिटी मिले उसमें हमको वैल्यू पिक जो हमारे जो सिलेक्टेड बास्केट्स में जो स्टॉक्स हैं हमें वो बाय करने चाहिए। So that's all from our end. Thanks and have a good day.